Hello everyone, welcome to the last video of this series where we have mostly covered everything जो एक moot court competition में required होता है from the point of starting your research to preparing your moot court memorial to presentation, formatting, usage of word language, etc. 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 We are here at the end of this series where we are going to talk about the preparation of the oral arguments as to how one should go about wrapping their heads कि oral arguments कैसे present करनी है and how can you win a moot court competition. So before anything starts you must realize कि moot court competition में oral arguments के एक dedicated number होते हैं मेमोरियल के अलग होते हैं, रिसर्च के अलग होते हैं, बट मूट कोर्ट आर्ग्यूमेंट में ओरल आर्ग्यूमेंट्स के नंबर काफ़ी सब्सटैंशियली हाई होते हैं. They actually form a very major part of the scoring pattern. So it is very very important if you're aiming towards winning the moot court, or in general it really helps you to develop your communication skills, your interactions, your presentation, your arguments, your presence of mind, observation, etc. etc. This is something that can really help you as a lawyer inculcate those skills, imbibe those imbibe that mindset that is required to approach the bench or judge in the future. मूविंग ऑन, इस वीडियो में मैं आपको एक हेड्स अप दे दूं. इस वीडियो में मैंने वो चीज़ें नहीं कवर करी हैं जो हर दूसरे ओरल आर्ग्यूमेंट प्रिपरेशन में कवर होती होंगी. मतलब मैंने आपको ये नहीं बताया दैट यू हैव टू बी एलोक्वेंट with what you say, you have to be clear in thoughts, you have to be structured in manner, etc. etc. That is something I'll be covering along the pattern, along the series. मेरा जो मेन फोकस है वो आप तक पहुंचाना है कि कौन सी लैंग्वेज और किस सीक्वेंस में आप उस लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हो अपनी ओरल आर्ग्यूमेंट्स में टू लीव अ लास्टिंग इम्प्रेशन अपॉन द जज. सो सबसे पहली चीज, यू शुड ऑलवेज stick to what has been prescribed in your particular memorial. दैट इज़ वेरी सब्जेक्टिव. हर मेमोरियल में डिफरेंटली समझाया होता है और हर मूड कोर्ट कंपटीशन का, फॉर एग्जांपल नेशनल है, इंटरनेशनल है, एडीआर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, काफ़ी डिफरेंट पैटर्न होता है. मेरा मोटिव यहाँ पर आपको मूड एक आइडियल, एक होलिस्टिक पिक्चर देने का है कि आप कैसा रोड मैप फॉलो कर सकते हो, कौन सा पाथ ले सकते हो, सो दैट यू मोरलेस डू कवर एवरीथिंग इन अ वेरी फ्लॉलेस एंड सीमिंगली वेरी इंप्रेसिव मैनर. सो स्टार्टिंग ऑन, मैं आपके दिमाग में एक माइंडसेट डालना चाहूँगा. फॉर एग्जांपल यू आर सिटिंग इन द रूम जहाँ पर आपको अपने ओरल आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करने. ऑब्वियसली आप बेंच में पहले ही नहीं खड़े होगे, यू विल बी अमंग्स द क्राउड और मे बी सिटिंग बिहाइंड, एंड देन there is going to be a mediator or the person who manages the court, who is going to ask either of the parties to come up and present their case. सो उनके बुलाने से ही आप नहीं पहुंच जाओगे सीधे बेंच में. यू टेक यू स्टैंड 1 feet, one foot away from the podium, from the bench, and ask the judge for their permission to approach the bench, and that is when you start speaking your arguments. तो मैं आइडियली कैसे, किस लैंग्वेज में पूछता हूँ. टेक परमिशन बिफोर बिगिनिंग. द काउंसिल सीक्स परमिशन टू अप्रोच द डायस. वेट फॉर जजेस एफर्मेशन. एफर्मेशन मतलब वो अपना सर हिला सकते हैं, यस कह सकते हैं, या फिर ही मे बी ही कैन जस्ट डू अ हैंड जेस्चर. यू विल हैव टू बी ऑब्जर्वेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. यू डोंट ओनली वेट फॉर वर्बल कम्युनिकेशन, इट कैन बी in any form. Sorry, oral communication can be in any form. And then you always please, ये बहुत ज़्यादा exaggerated लगेगा but आपको हमेशा much obliged कहना है. You have to be grateful towards the judge and pay them their due respects, and always follow this pattern throughout your oral arguments. उसके बाद
You always have to offer proper greetings to the judge and also seek permission for referencing. जैसा कि मैंने आपको बताया होगा, आप डायस पे अब आ गए, आपके माइंडसेट में वो पिक्चर है ना पूरे कोर्ट रूम की, अब आप डायस पे आ गए हो. नाउ you greet the judge by saying what? Good morning to the honorable bench. प्लीज नोटिस दिस, यहाँ पर हम लोगों ने बेंच बोला है क्योंकि हम लोग पूरे एक कोर्ट में एक जज, दो जज, तीन जज, चार जज, पांच जज, कोई भी हो सकता है, इसलिए उनको कलेक्टिवली कॉल देम अ बेंच. फिर उसके बाद quickly observe beforehand if only male judges or only lady judges are present, then you must ask the following: if it may please, the council seeks permission to address the bench as your ladyship slash lordship. अगर बेंच में सिर्फ मेल बैठे हैं तो यू रेफर टू द बेंच एज योर लॉर्डशिप. अगर सिर्फ लेडीज हैं तो you refer to them as your ladyship. But most of the scenarios में bench diverse होती है, लड़के और men and women both of them are sitting on the bench, both female judges and male judges. So you always ask them, if it may please, the council seeks permission to address the bench as your, कुछ भी आप पूछ सकते हो, lordship, ladyship. Ideally you ask what is in majority, you observe what is in majority. That's completely subjective. काफ़ी सारी लड़कियां प्रेफर करती हैं बेंच को लेडीशिप रेफर करने के लिए. सो इट्स रियली रियली सब्जेक्टिव. You know, it's empowering in a way as well. It tells that you are being inclusive, because a lot of female judges do not take it very nicely when you don't take this permission and continue to refer the entire bench as your lordship. Okay, because these are not general neutral terms. ऑल्दो काफ़ी सारे मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स में, मैं आपको यहाँ बता ही दूँ, बेंच को एक्सीलेंसी भी रेफर करते हैं. थ्रू आउट द मूड कोर्ट दे रेफर टू देम एज एक्सीलेंसी. ये आपको एक्चुअली आपके मेमोरियल में पता चल जाएगा. मोस्टली ये इंटरनेशनल मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन में होता है. नेशनल में यू डू रेफर इंडिविजुअली एज लेडीशिप एंड लॉर्डशिप. आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर उन्होंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा इंडिविजुअली एंड यू आर इंडिविजुअली आंसरिंग टू देम, देन यू कैन ऑब्वियसली call them your ladyship or lordship, whichever male judge or female judge is asking you that question. ठीक. लेकिन अगर आप कलेक्टिवली बात कर रहे हो तो ऑलवेज सीक परमिशन बिफोर हैंड. ठीक है. मूविंग ऑन, मच oblige your lordship. If the bench consists of both male and female judges, highly likely to happen, you must say this: the council recognizes the gracious presence of your ladyship. However, for the convenience of the proceedings, the council seeks permission to address the bench as your lordship slash ladyship. जैसा मैंने आपको बताया, अगर female judges हैं तो always seek permission. In general, you always seek permission to as to what you are going to refer them. This is something that you must keep in mind. Much obliged, your whatever you have decided to refer them as. ओके. आइडियली मैं अगर आपको बताऊं तो अगर एक भी लेडी है तो डू आस्क दिस एंड ट्राई टू रेफर देम एज लॉर्डशिप, बिकॉज it's easy on the lingo. It's nothing personal, but it's easy on the lingo and it's easy for you to conveniently refer everyone as lordship again and again. Moving on, you begin with the case of the judge and the jurisdiction based on which side that you will be presenting. If you are presenting the appellant or petitioner side, the counsel, you will say this, the following: the counsel is appearing before the honorable court in the matter of the defendant party, the appellant party versus the defendant party, ABC versus XYZ, on behalf of the appellant slash petitioner, which you only use one term, appellant or petitioner, under whatever your jurisdiction is. Jurisdiction आपको पता होगी आइडियली, जैसे कि मैंने आपको पिछले अपने मेमोरियल वाले वीडियोस अगर आप रेफर करेंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि इंटरनेशनल कोर्ट्स में जुरिस्डिक्शन अलग होती है, क्रिमिनल केसेस में जुरिस्डिक्शन अलग होती है. मैंने आपको मल्टीपल मेमोरियल्स दिखाए थे, तो आप देखोगे वो आप रेफर करोगे कि ये आपकी जुरिस्डिक्शन है
और इस अथॉरिटी के अंडर you have the power to present this case in front of this particular court, whichever court that is. वो आपके मेमोरियल में मेंशन्ड होगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ डैश कंट्री, हाई कोर्ट ऑफ डैश कंट्री, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड इफ यू आर प्रेजेंटिंग फ्रॉम द रिस्पोंडेंट साइड, सब कुछ सेम रहता है, बस रिस्पोंडेंट एपेलेंट और पिटिशनर की जगह रिस्पोंडेंट या डिफेंडेंट आ जाता है. ओके, एंड यू कंटिन्यू टू टेल व्हाट द jurisdiction is. ऑल्सो यू मस्ट कीप इन माइंड कि हमेशा कोर्ट में केस कौन लेकर जाता है? द पिटिशनर. द पिटिशनर इज द वन who has filed the case against you. So you make sure, as a respondent, you are always responding to their appeal or the petitioner. So that is one slight difference that you will see in both these statements. Again, moving on, uh, let the let the judge briefly know the issue involved, explain them, and content, explain time and content division. It is very important कि आप जज को एक brief idea दे दो. This you can do very smartly. For example, your lordships, there are three main issues that the council has recognized to deal with in this case. Moving on to telling them what the issues are. Issue number 1, issue number 2, issue number 3, whatever, however the number of issues are. आप इस वक्त अपने सब issues के pointers नहीं बताओगे, वो आप अपने summary of some sorry arguments advance में हमेशा point out कर सकते हो. और you can always ask the judge to also refer to the table of contents जहाँ पर आपने ये सब briefly mention भी करा होगा, so that they do get an idea कि आप कौन सा issue मेजरली उनके लिए इंटरेस्टिंग होने वाला है, कौन सा पॉइंट ऑफ कंटेंशन दैट दे वुड वांट यू टू टॉक अबाउट. बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि जजेस आपके तीनों इश्यूज नहीं सुनेंगे. दे विल जस्ट आस्क यू टू present issue number 2, issue number 3, whichever they think is going to interest them the most, and it is the biggest point of contention, most substantial point that needs to be resolved. Okay. फिर उसके बाद मूविंग ऑन, टाइम डिवीजन एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है. बहुत सारे लोग ये नहीं करते हैं. इससे जज को एक ट्रैक मिल जाता है कि स्पीकर 1 कितनी देर के लिए आने वाला है, तो स्पीकर 2 कितनी देर के आने वाला है. तो इस हिसाब से वो आपसे क्वेश्चंस भी उसी तरीके से पूछते हैं. काफ़ी सारे जजेस, और दे डू नॉट पे अ लॉट ऑफ हीट टू दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट, बट अ लॉट ऑफ देम डू. सो इट्स ऑलवेज बेटर टू लेट देम नो बिफोर हैंड. How do you go about this? The exact language that I personally use. The council will be dealing with the first and the second issue. You're talking about yourself, and would be speaking for dash number of minutes, whichever number of minutes that your team has internally decided. And the co-counsel will be dealing with the third issue and would speak for dash minutes, respectively, reserving dash minutes for rebuttals. ठीक है. आइडियली आप क्या करना कि अगर सेकंड आपका जो को काउंसिल है वो थर्ड इशू ले रहा है, बाद वाला इशू ले रहा है, तो आइडियली दे आर द वंस हु डू स्पीक द प्रेयर. यू डोंट शिफ्ट बैक एंड फोर्थ कि फर्स्ट मैंने करा, सेकंड उसने करा, थर्ड मैंने करा. अगर फर्स्ट और सेकंड आपने करा है, दैट इज व्हाट यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर, देन सेकंड और थर्ड और प्रेयर सेकंड को काउंसिल बोलेगा. इट इज़ एंड ये आपको मेमोरियल की फॉर्मेटिंग करते समय, मूड कोर्ट की प्रिपरेशन करते समय ही ध्यान में रखना होगा कि कौन कितनी देर के लिए बोलने वाला है. टाइम डिविजन इज द की. टाइम मैनेजमेंट इज very very important. I can't emphasize enough. The total time limit for each speaker would be told to the team before the round, so you need to make the changes accordingly. कई बार ये मूड कोर्ट जो ऑर्गेनाइजिंग कमिटीज होती हैं, यही बता देती हैं कि स्पीकर 1 को इतनी देर के लिए बोलना है, स्पीकर 2 को इतनी देर के लिए बोलना है, ताकि जज दोनों को सुन पाए. यही नहीं कि मेरा एक स्पीकर अच्छा है तो वही 20-25 मिनट के लिए बोल रहा है और दूसरे के लिए टाइम ही नहीं बचा. Sometimes they do this, but most of the times they do not. They completely leave it upon the team to decide how are they dividing time internally. I hope you guys are all with me.
बिकॉज दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोसीडिंग विद द प्लीडिंग्स, ये इससे पहले जो था ये आप अपनी फाउंडेशन ले कर रहे थे. यहाँ पर इतना कुछ क्रिटिकल नहीं था. दीज आर द दिस इज द एस्पेक्ट दैट इज गोइंग टू प्ले द मोस्ट क्रूशियल रोल in your oral argument section. How do you start? The council seeks permission to proceed with the pleadings. जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, you have to be very confident, fluid, and natural. You know, these are the three key aspects that you'll have to focus upon. You will have to be confident, fluid, and natural. आपको ऐसे नहीं बोलना that जज को लगे कि रट के आ गया. The council seeks permission to proceed with the council seeks permission to proceed with the pleadings. Your Lordship, the first issue is, you go on to tell them the first issue, which the Council would be establishing on three grounds. The grounds are your sub issues. जैसा मैंने आपको बताया था, आर्ग्यूमेंट्स एडवांस पे हम लोग पहुंच गए हैं. यहाँ पर आप बता सकते हैं कि जो मेन इशू है, इसके अंदर इसको आपने तीन हिस्सों में डिवाइड करा है और इन तीन हिस्सों में आप क्या क्या सब इशू हैंडल करने वाले हो. इससे होता क्या है, द जज गेट्स अ वेरी क्लियर पिक्चर of what targeted questions you are going to be dealing with and what clarifications that you're going to be providing with. क्योंकि because you are not the only one जिनके वो आर्ग्यूमेंट सुन रहे होंगे, तो उनको पता है कि कहाँ पर की कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होने वाले हैं और कौन से हैं इश्यूज जो सिर्फ फाउंडेशन ले करेंगे. ओके. And it's also easier to for the judge to refer to, and it's very convenient for you as a speaker as well to hold the judge with you, walk them through the entire process. Your first you first list down your grounds and then you say that the proceeding with the first issue, it is very important कि आप अपने grounds ले कर दो. फिर उस सब ग्राउंड्स की मैं बात कर रहा हूँ. इशू इज द मेन हेडिंग, उसके नीचे के जो सब इश्यूज हैं दे आर द ग्राउंड्स. ओके. उसके बाद आप फर्स्ट इशू के साथ स्टार्ट करोगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ योर आर्ग्यूमेंट इज दैट दिस न्यू पर्टिकुलर लॉ जो आपके मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन में है वो वायलेट कर रहा है आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, देन द प्लीडिंग्स वुड बी एज फॉलोज. योर लॉर्डशिप, द फर्स्ट इशू इज दैट द न्यू लॉ वायलेट्स आर्टिकल 21 of the Constitution of India, which the Council would be establishing on three grounds. First, the law in question is outright arbitrary. Secondly, there is no rational nexus of the object of the new land with the principles of natural justice. Thirdly, the new law lacks the balance of intelligible differentia. You know, you have to very clear, crisp and very brief in manner. आपको यहीं पर बहुत ज़्यादा नहीं बोलना है, एक एक लाइन में समझा देना है कि आप क्या क्या एस्पेक्ट कवर करने वाले हो और कौन कौन से ग्राउंड्स में आप अपना इशू प्रूव कर रहे हो. Make sure to refer, I'm reading from the PPT, make sure to refer the judges to your memorial and the mood problem throughout to keep them engaged in between your speech. After the first speaker is done, he or she will have to say your lordship. Now the council would be dealing with the third issue. Now the co-council will be dealing with the third issue. ऐसे ही आप अपना फर्स्ट इशू भी कंप्लीट करोगे, ऐसे ही सेकंड इशू भी कंप्लीट करोगे और उसके बाद आप अपने को-काउंसिल को बताओगे. आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्वेश्चंस कैसे डील करना है, दैट आई विल बी डीलिंग विद लेटर ऑन. अभी वील जस्ट गिव यू अ ब्रीफ ये प्राइमरी आइडिया कि इश्यूज के साथ कैसे डील करते हैं. ओके. यू ऑलवेज एंड योर स्पीच हाउ, if your lordship are satisfied with the pleadings submitted in the first and the second issue, the council seeks permission to call upon my co-counsel to begin with the pleadings for the third issue. Okay. Always ask if they are satisfied, even when they might have asked you some questions, वो मैं आपको बाद में भी बताऊंगा. क्वेश्चन पूछा है, you always ask if your lordships are satisfied with the response. The council seeks permission to move on with the pleadings. Okay, ऐसे ही कहते हैं. Moving on, let the second speaker begin and conclude the prayer. जैसा मैंने आपको बताया था, अगर second speaker
थर्ड लास्ट के इश्यूज ले रहा है तो वही प्रेयर बोलेगा, आप फिर से नहीं आ जाओगे प्रेयर बोलने। जैसा मैंने आपको बताया था वही सेम तरीका यूज़ करना है जो यहाँ पर हम लोग ने यूज़ करा था। कैसे मेन इशू क्या है और ग्राउंड्स क्या है, यानी कि सब इश्यूज वैसे आप डिवाइड कर सकते हो। द काउंसिल सीक्स परमिशन टू प्रोसीड विद द प्लीडिंग्स ऑफ द इशू नंबर 3। You may divide the issues into several grounds for structural presentation in accordance with your memorial. Also मैंने पिछली स्लाइड से एक पॉइंट मिस कर दिया कि you have to make sure that you continuously ask the judge to keep referring to your memorial as in when you're moving with your pleadings। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने इशू नंबर 1 बोला तो आप ऐसे बोल सकते हो कि योर लॉर्डशिप प्लीज रेफर your lordship please refer to page number this, uh, issue number 1.2, paragraph 3। यहाँ पर exactly you will find what I am talking about। ओके, ये कंटिन्यूसली आप रेफरेंस यूज कर सकते हो, इससे इंगेजमेंट बहुत हाई रहता है जज का। दे आर विद यू, दे आर वॉकिंग विद यू, देयर ब्रेन्स एंड थॉट्स एंड एक्शंस एवरीथिंग आर अलाइनिंग with what you are trying to say। Okay. If your lordships are satisfied with the pleadings submitted, then the council seeks permission to move forward to the prayer. Memorize the prayer wholeheartedly. I cannot emphasize enough. You cannot look at your memorial while you are saying the prayer. Ideally, because प्रेयर इज द थिंग जो आप कोर्ट से मांग रहे हो, और वही उसमें क्लैरिटी होना, फुल फ्लेजेड क्लैरिटी होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पूरी की पूरी याद होनी चाहिए, आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए अपने मेमोरियल की तरह जब आप स्पेशली प्रेयर कह रहे हो। ऑल तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ओरल आर्ग्यूमेंट्स भी नहीं मेमोरियल की तरफ देखने चाहिए, बट समवेयर और द अदर एवरी वन डज नीड टू लुक एट देयर मेमोरियल। और एवरी mostly people create like a cloud roadmap on a sheet of paper, for it makes it easier for them to present. You know, you always carry something whenever you feel blank, you can refer to this particular piece and it makes the process a lot easier। तभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्रेयर तो आपको याद होनी ही होनी चाहिए। How do you end? The council is grateful to your lordship for granting the opportunity to argue before the honorable court. Thank you। Throughout, please be very very respectful, please be very very cautious of the language that you are using। ओके, ये कुछ की एडिशनल टिप्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। एवरी टाइम यू रिसीव अ क्वेश्चन, या सबसे पहला पॉइंट, एवरी टाइम यू रिसीव अ क्वेश्चन फर्स्ट थैंक द बेंच फॉर द क्वेश्चन एंड देन गिव अ रिस्पॉन्स। देखो, इसको कंफ्यूज मत करना। फॉर एग्जाम्पल कई बार क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस आते ही जाते हैं, यू जस्ट थैंक देम वंस। अब ये नहीं कि उन्होंने मुझसे कुछ पूछा कि वाई डू यू थिंक द लॉ इज आर्बिट्ररी, इस केस में तो ऐसा कहा गया था। Thank you, thank you lordship, which whoever this is coming from, or if it's coming from the bench collectively, then refer that। Thank you lordship for your question। uh, the council thinks, okay, आप ऐसे continue, you can continue like this, uh, to answer the question। The council would ask the bench to refer to this particular paragraph of this page number where in the memorial the council has emphasized upon the key aspects that lays these grounds, etc etc। अगर उससे फिर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप फिर से थैंक यू नहीं बोलोगे, एक बार ही बोलना है, ऐसे बहुत टाइम वेस्ट होगा और जज भी अनॉय हो जाता है। Moving on, if you do not observe a clear intimidation from the judge to move on after a question, make sure to ask for their permission। अगर आपको लग रहा है कि आपने किसी क्वेश्चन, उन्होंने क्वेश्चन पूछा, आपने आंसर दिया और उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है, ये कई बार होता है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, कई बार होता है, जजेस आर नॉट ऑलवेज वेरी वेरी प्रेजेंट। तो you always ask them clearly कि if your lordships are satisfied, the council seeks permission to move on with the pleadings। If you have a clear point of view, different point of view, or while imparting a contrary opinion, make sure to do it respectfully and appreciatively। Use phrases like the council begs to differ, or certainly your lordship, the council wishes to put forward। ओके, कई बार ऐसा हो सकता है कि जज आपसे कुछ कॉन्ट्ररी कह रहे हो,
which you do not completely agree to. You are not like, you don't say it like कि, no counsel, I think you are wrong. No lordship, I think you're wrong. This is what the council thinks. You never say this. This is very, very disrespectful. Please use these phrases that I've given you. And even if you're adding something to what the judge might have said, uh, abhi, you always use this phrase, certainly your lordship, the council agrees with your opinion. Although this is how you move on to disagree. The council wishes to put forward, this is how you add on something. In case, moving on to the next point, in case you make a mistake, do not forget to apologize before moving on. ये बहुत लाइकली है कि आप कुछ या कुछ गड़बड़ ज़रूर करोगे, कुछ गलत लैंग्वेज, कोई गलत तरीका, कुछ गलत पेज नंबर बोल देना, कोई गलत रेफरेंसिंग दे देना. दिस इज़ वेरी हाईलाइट बिकॉज इट्स अ वेरी हाई प्रेशर सिचुएशन एंड वी आर ऑल ह्यूमंस. सो ऑलवेज अपोलोजाइज. द जजेस ऑल्सो अंडरस्टैंड बिकॉज कि ये लोग भी अभी बच्चे हैं. Moving on to the next point. If you do not have an answer to the question, do not ramble or blabber unrelated things. Simply apologize, assure to read more on the aspect, and move on. Please, वो judges हैं, they are there for a reason. They are there to judge you because they have a very good understanding and knowledge of the subject matter in question. Please don't try to fool them around by rambling, blabbering random facts and uh, situations वगैरह वगैरह. Just accept that you are not, that you don't have enough clarity at the moment of this particular aspect, but you'll definitely read on it. Okay, moving on to the next point. Make sure to hold the judge's interest by making your pleadings interesting, structured it like structure story like. दिस इज़ व्हाट पर्सनली आई यूज्ड टू डू. मैं यही कोशिश करता था कि मैं अपने फैक्ट्स को लीगल इश्यूज के साथ ऐसे मिक्सअप करूं, ऐसे अलाइन करूं कि वो एक स्टोरी फॉर्मेट में निकल कर आए. इससे बहुत क्लैरिटी मिलती है जज को भी और आपको भी. कि it's very easy, it's easier to remember stories as well, and it's easier for, and it's more interesting for the listener in general. Not even judges, everyone. uh, the biggest of the lawyers everywhere, they try to explain everything in a story like format. They'll start from the historical aspect, then they'll start on to moving talking about the developments that have happened, then they'll talk about the current scenario, and then they'll be moving on to talking about the futuristic developments that can possibly happen, and at the end they'll make their suggestions that how should the court contribute or amend or rectify the current issue. Okay, moving on. Avoid using casual or incomprehensive language. You don't have to use very complex jargons ki, you're using very heavy words. Judge wo bhi judges hain, they are also humans, and it's very, and it's humanly nature that it's difficult for not everyone is very well versed with heavy language and vocabulary. Use as simple language, as simple words that you can. Your intention is to put forward your idea clearly in a smart way, obviously, but you don't have to, you're not there to confuse them कि उनको किसी particular word का meaning नहीं पता, but you're continuously using that they're not going to ask you, but वो क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी उनको. तो ट्राई टू कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल. Absolutely refrain from repeating what is written in the memorial. This is like a big no no. Please never do this. Never in your life कि आप वही मेमोरियल से पढ़ के बोल दे रहे हो. आई एम श्योर इतनी तो समझ सब में ही है. मूविंग ऑन to the next point. Limit the scope of your arguments to your memorial. Follow similar chronology. ये नहीं करना है आपको कि आप वो एस्पेक्ट्स उठाकर ले आएँ जो आपके मेमोरियल में मेंशन्ड ही नहीं है. क्योंकि जज ऑब्वियसली पूछ सकता है कि ये आपने कहाँ मेंशन करा है अपने मेमोरियल में? आई वुड लाइक टू रीड ऑन इट, आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड. बट वो तो आपने बाद में ऐड कर लिया मेमोरियल में, क्योंकि आपने किसी और की आर्ग्यूमेंट सुनी थी या फिर किसी और का कुछ
एस्पेक्ट आप लेना आप कोई कुछ और एडिशनल ऐड करना चाहते तो यू कैन डू दैट, बट यू विल हैव टू स्पेसिफिकली मेंशन इट बिफोर यू डू इट। क्योंकि एज इन व्हेन यू मूव फॉरवर्ड विद द राउंड्स, कई कई बार नए नए एस्पेक्ट्स निकल के आ जाते हैं, पर you will have to specifically tell it to the judge beyond the aspect of the beyond the scope of this the memorial we have submitted. This is something that we would additionally like to present, throw some light upon for this, for the bench to focus on. बट यू हैव टू बी रियली रेडी फॉर इट, क्योंकि अगर आप स्कोप से बाहर जा रहे हो तो आप अपने लिए ही वो अनचार्टेड टेरिटरी में स्टेप कर रहे हो, जिससे क्वेश्चंस अगर आ गए तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू डील विद। सो थिंक about it very smartly before you actually take a step towards it. एंड क्रोनोलॉजी का ध्यान बहुत रखना है, ये नहीं करना कि इशू, अगर आप फर्स्ट इशू ले रहे हो, फर्स्ट इशू को आपने 1.1 1.2 1.3 1.4 में मेंशन करा है, आपने 1 चालू करा, आप सीधे 1.3 में आ गए, फिर आप 1.1 में चले गए, फिर आप 1.4, ये नहीं करना है। 1.1 2 3 4 ऐसे ही फॉलो करना है, क्रोनोलॉजी फॉलो करनी है। फिर उसके बाद द रिसर्चर मस्ट बी अटेंटिव फॉर to form a question for dealing with the rebuttals. देखो, दिस इज समथिंग दैट आई पर्सनली बिलीव इन, कि अपने प्रेजेंटेशन, अपनी स्पीकिंग, ओरल स्पीकर्स और अपने ओरल आर्ग्यूमेंट से पहले बड़े एंग्शियस बैठे होते हैं। there's a lot going on inside their head, so it's difficult for them to observe the other party's presentation to come up with a question. That is where the researcher's duty comes to play. They have to be present, they have to be mentally focused on what the other party is saying and come up with a smart question to throw at them during the rebuttals. Not exclusively, this is not an exhaustive strategy, but this is what I personally believe. So researcher is someone that can really help you get through the rebuttals, because that again forms a very crucial part of the moot court scoring. The speaker, moving on to the next point, the speaker needs to deal with the rebuttals very comprehensively. Do not waste time and avoid opening new aspects. Take support of your memorial if required. रिबटल्स के टाइम पे अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया है, तो कई सारे लोग क्या करते हैं, बिकॉज द अदर पार्टी इज ट्राइंग टू अटैक यू इन अ वे, they might ask you something that you have already mentioned in your memorial, or maybe try to mold it a little bit and present it in a way that does make you a little anxious or irritate, make you feel, it can be a mix of feelings, because at the end of the day they are your peers, but you don't have to let those emotions influence you. आपको कुछ ऐसा एस्पेक्ट नहीं अनफोल्ड करना है कि ये भी तो कर सकते थे, ये एडिशनल चीज़ मैं बताना चाहूँगा, दैट डज नॉट रिफ्लेक्ट वेरी नाइसली। दिस इज़ माई पर्सनल स्ट्रैटेजी, कि यू कैन ऑलवेज टेल देम कि आपने अपने मेमोरियल में इस इशू के इस सेक्शन में ये चीज़ मेंशन करी थी, जहाँ पर आपने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो अभी काउंसिल, जो आपके कंपेटिटर्स, जो आपके ऑपोजिट पार्टी पूछ रही है, उसको डील करा था। दिस व्हाट आई पर्सनली बिलीव इन, क्योंकि वो स्कोप से आगे तो कुछ पूछ ही नहीं सकते हैं, और अगर आप वेल प्रिपेयर्ड हो तो आपने सब कुछ करा होगा ही होगा। तो इट्स ऑलवेज स्मार्ट टू टेल देम कि ये पर्टिकुलर इशू रेफर कर लीजिए, यहाँ पर मैंने ये मेंशन करा था, एंड यू रीफ्रेज इट, यू जस्ट रीआइटरेटेड कि ये मैंने मेंशन करा था, दैट इज हाउ this question is not something to be, it will not make you feel confused, it will not lead to any confusion. Moving on to the last point, be thoroughly prepared for potential questions during research and have a good hold over your memory. This is very, very important. आपको अपने रिसर्च के टाइम से लेकर प्रिपरेशन के टाइम तक, जब आप मेंटोर्स की हेल्प ले रहे हो, जब आप मूड कोर्ट सोसाइटी की हेल्प ले रहे हो, प्रोफेसर्स की ले रहे हो, सीनियर्स की ले रहे हो हेल्प, तब यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस एंड ऑलवेज हैव दैट पर्सपेक्टिव इन माइंड, दैट क्या इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज समथिंग दैट द जज और मे बी योर competitors can ask you in the moot court competition. This will really help you uh,
get through the entire competition really well, and I'm sure you guys will come out victorious and perform to the fullest of your potential. You know, these are more or less this is more or less everything that I've tried to cover: the tips, the language, the mannerism, the etiquettes, the presentation, structuring, everything that you can imbibe while you're preparing and presenting your oral arguments. I hope this series has been helpful, uh, and we'll continue to bring more such videos for you in the future. Thank you for watching. It was a pleasure having you all as my audience.